Hello and welcome students in my video lecture series on the subject of botany. We are discussing the botany of class 12th and we are in the unit of molecular basis of inheritance. In the previous lecture we discussed about the genetic code and the various properties of genetic code. Besides, we also studied how mutation can enable us to study the relationship between what's called as the DNA, the gene and the sequence of amino acids in proteins. In today's video lecture we will try to study the adapter molecule, the structure of adapter molecule, that's tRNA. We will try to study about the process of translation. We will try to study about the structure of ribosomes, and we will focus on the first few steps of the process of translation, that is how activation of amino acids takes place and subsequently how charging of tRNA takes place. So we will first focus on the structure of tRNA molecules. We know that from the very beginning of proposition of genetic code, scientist Francis Crick has something in mind that there is a mechanism, that mechanism के बदौलत से जो है एक कोडान रीड होता है और उस अकॉर्डिंगली उस कोडान के हिसाब से अमीनो एसिड्स को लाया जाता है, अमीनो एसिड्स को पिक किया जाता है फ्रॉम अमीनो एसिड पूल. This was in the mind of Francis Crick because he was sure that अमीनो एसिड का ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है कि एक अमीनो एसिड अपने आप कोडान को रीड करे और उसके बाद अपने आप बाइंड हो जाए with other amino acids in a polypeptide chain. So this was in the mind of Francis Crick from the very beginning of proposition of genetic code, that एक मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म के बदौलत से mRNA के ऊपर कोडान को रीड किया जाता है और उसके अकॉर्डिंगली अमीनो एसिड को पिक किया जाता है फ्रॉम अमीनो एसिड पूल और उसे इनकॉर्पोरेट किया जाता है इन ए पॉलीपेप्टाइड इन ए प्रोटीन. शाबाश. तो लेकिन क्योंकि उसे पता था कि अमीनो एसिड में एक अपनी ऐसी सलाहियत नहीं थी, क्योंकि उससे पहले साइंटिस्ट का कंसेप्ट था अमीनो एसिड अपने आप रीड करता है इस कोड को और अपने आप ये अमीनो एसिड बाइंड हो जाता है एक पॉलीपेप्टाइड के अंदर दूसरे अमीनो एसिड्स के साथ. लेकिन बाद में देखा गया कि असल में कोई अडॉप्टर मॉलिक्यूल है. साइंटिस्ट ने बाद में, फ्रांसिस क्रिक ने बाद में देखा एक्चुअली देयर इज एन अडॉप्टर मॉलिक्यूल that reads the codon on the mRNA on one hand and brings the amino acids and binds the amino acids to the polypeptide chain. ये बाद में देखा गया. इस एडाप्टर मॉलिक्यूल को, ये एडाप्टर मॉलिक्यूल पहले भी अवेलेबल था, इसे तब टीआरएनए नहीं बोलते थे, इसे तब एडाप्टर मॉलिक्यूल नहीं बोलते थे, बल्कि इसे सॉल्युबल आरएनए बोला जाता था. जेनेटिक कोड के प्रपोर्शन के टाइम से पहले ही ये सॉल्युबल आरएनए का कंसेप्ट था साइंटिस्ट को. लेकिन इस सॉल्युबल आरएनए का role as adapter molecule to read the codon on one hand and to bring amino acids on another hand, ये किसी को पता नहीं था. ये फ्रांसिस क्रिक ने पहली बार डिस्कवर किया that this tRNA जो है it acts as an adapter molecule. How tRNA acts as an adapter molecule, or what does we mean by the role of tRNA as an adapter molecule, is that this tRNA molecule has a tendency that it reads the codon on one hand and on the other hand brings amino acids and associates those amino acids to a polypeptide chain, to the amino acids present in a polypeptide chain. And this if you see the structure of tRNA molecule, this adapter molecule, we are having a few loops. One is anticodon loop. See, this is anticodon loop, and this is, as the name indicates, this is the loop where anticodon is present. This is the loop with the help of which we are able to recognize the codon present on mRNA. See, this is mRNA. This mRNA has a codon, an initiator codon, that is AUG. This initiator codon is present on mRNA, and on this tRNA we are having a loop. And this loop has an anticodon. See here, A is here, U is here, G is there in the codon. See, we are having opposite bases, complementary bases present in anticodon. A के बदले U है, U के बदले A है और G के बदले C है. So with the help of this anticodon loop, shabash, this tRNA is able to recognize, is able to read the codon present on the
mRNA, and on the other hand we are having a ribosomal, we are having what is called as an acceptor arm. This is an amino acid, this is amino acid binding site, BS मैंने यहां पे मेंशन किया. This is amino acid binding site. See, at the 3' end we are having a single stranded sequence of conserved sequence of CCA and then a hydroxyl group. CCA are present at the 3' end of this tRNA, and remember this 3' end acts as a site where amino acid binding takes place, where amino acid is associated with this tRNA. So this 3' end of the tRNA, this is also called as amino acid binding site. यहां पे हमारे पास एंटीकोडॉन लूप है. ये एंटीकोडॉन कोडॉन को रिकॉग्नाइज करता है. उसके हिसाब से ही ये जो हमारे पास एक्सेप्टर आर्म है, इसको एक्सेप्टर आर्म भी बोलते हैं, बिकॉज ये एक्सेप्ट करती है. यहां पे अमीनो एसिड्स एक्सेप्ट किए जाते हैं, बाइंड किए जाते हैं, तो इसे हम अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट भी बोलते हैं. याद रखना, इसे अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट बोलते हैं. तो हमने देखा एक एडाप्टर मॉलिक्यूल, एक टीआरएनए के अंदर हमारे पास एक एंटीकोडॉन लूप है और हमारे पास एक एक्सेप्टर आर्म है. एंटीकोडॉन लूप की का काम क्या है? ये कोडॉन को रीड करते हैं एमआरएनए के ऊपर, और एक्सेप्टर आर्म का काम क्या है? ये अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट एक्ट करता है. ये वो जगह है जहां पे अमीनो एसिड कोडॉन के मुताबिक बाइंड हो जाता है. मैंने बोला AUG कोडॉन होगा तब मीथियोनीन यहां पे बाइंड होगा. ट्रिपल यू कोडॉन होगा तब फिनाइल एलानिन यहां पे बाइंड होगा, एंड सो ऑन. इसके अलावा हम अगर आप देखेंगे यहां पे हमारे पास और दो लूप्स है. एक लूप जो है इसमें कुछ मॉडिफाइड बेसिस है, एक इसमें थाइमीन है, एक मैंने साई लिखा है, साई सीडोयूरिडीन, एक इसमें साइटोसिन है. तो इस लूप का नाम है T-Cy-C लूप, बिकॉज दिस लूप हैज, दिस इज ए सिंगल स्ट्रैंडेड लूप. रिमेंबर यहां पे डबल स्ट्रैंड रीजन्स नहीं है. ये वाले सारे रीजन्स जो है ये डबल स्ट्रैंडेड है, ये सिटेम्स है, डबल स्ट्रैंड सिटेम्स है, लेकिन ये सिंगल स्ट्रैंडेड लूप्स है. ये सिंगल स्ट्रैंडेड लूप है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड लूप है. इस लूप के अंदर मॉडिफाइड थाइमीन सीडोयूरिडीन, इसमें मॉडिफाइड बेसिस है. कौन से बेस है? एक थाइमीन है, एक मॉडिफाइड बेस है दैट इज कॉल्ड एज सीडोयूरिडीन, साई, एंड देन देयर इज साइटोसिन. इस लूप को हम बोलते हैं T-Cy-C लूप. इस लूप का अगर आप देखोगे इसका रोल क्या है, जब प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन होती है, उस प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन के दौरान राइबोसोम्स जो है वो इसी लूप के साथ बाइंड हो जाते हैं, टीआरएनए के इस जगह के साथ बाइंड हो जाते हैं. तो ये T-Cy-C थाइमीन सीडोयूरिडीन साइटिडीन लूप जो है इट एक्ट्स एज राइबोसोम बाइंडिंग साइट, बिकॉज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन राइबोसोम्स गेट एसोसिएटेड विद दिस लूप. See here we are having another loop. This loop is all called as DHU loop because it is having a modified base. That modified base is called as dihydroxyuridine. DHU stands for dihydroxyuridine. It has a modified base, modified uridine base, modified because this uridine base is hydroxylated, and this modified hydroxylated uridine base is called as dihydroxyuridine base. And this loop having this modified hydroxyuridine base, this is called as DHU loop. And remember, it is this loop to which amino acyl synthetase enzyme binds during the process of translation. जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है, जब ट्रांसलेशन होती है, उस प्रोसेस के दौरान एक एंजाइम यूज होता है. उस वो एंजाइम जो है वो अमीनो एसिड को एक्टिवेट करता है, वो टीआरएनए को चार्ज भी करता है. उस एंजाइम का नाम है अमीनो एसाइल सिंथेटेस. ये वो जगह है टीआरएनए की जहां पे अमीनो एसाइल सिंथेटेस एंजाइम बाइंड हो जाता है और इस टीआरएनए के साथ जोड़ता है किसको? अमीनो एसिड को. शाबाश, याद रखना, मैंने आपको बताया अगर जो टीआरएनए मॉलिक्यूल है इसे हम एडाप्टर मॉलिक्यूल बोलते हैं क्योंकि इसकी सलाहियत है ये एमआरएनए के ऊपर कोडॉन्स को रीड करता है.
जब ये mRNA के ऊपर कोडॉन्स को रीड करता है एक तरफ दूसरी तरफ, उसी के हिसाब से उसी के अकॉर्डिंग ये अमीनो एसिड्स को पकड़ के लाता है और जोड़ देता है। पॉलीपेप्टाइड में जो अमीनो एसिड्स होते हैं जोड़ देता है या प्रोटीन के अंदर इंसर्ट कर देता है। तो मैंने बोला अडॉप्टर मॉलिक्यूल इसको इसीलिए बोलते हैं। मैंने आपको बताया हर किसी टीआरएनए के अंदर दो इंपॉर्टेंट रीजन्स होते हैं। एक एंटीकोडॉन लूप होता है जहां पे 3 बेसिस होते हैं, वो 3 बेसिस रिकॉग्नाइज करते हैं कोडॉन को, जो कोडॉन एमआरएनए के ऊपर होता है। यहां पे एक अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट होती है, जो कोडॉन यहां पे होगा उसके हिसाब से यहां पे एंटीकोडॉन होगा। एंटीकोडॉन कोडॉन को रिकॉग्नाइज करेगा और सिग्नल भेजेगा, उसके हिसाब से अमीनो एसिड आएगा, वो इस टीआरएनए के 3 प्राइम एंड के साथ जुड़ेगा। शाबाश। इसके अलावा 2 और लूप्स है। एक टी-सी लूप है, इसको राइबोसोम बाइंडिंग साइट भी बोलते हैं, इसको राइबोसोम बाइंडिंग लूप भी बोलते हैं, क्योंकि प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन के दौरान हमारे राइबोसोम्स जो है वो टीआरएनए के इसी साइड इसी रीजन के साथ एसोसिएट होते हैं। हमारे पास एक और लूप है, इसको हम बोलते हैं डीएचयू लूप, डाइहाइड्रोक्सीयूरिडीन लूप। ये डाइहाइड्रोक्सीयूरिडीन लूप, इसको अमीनो एसाइल सिंथेटेस बाइंडिंग साइट भी बोलते हैं या इसको अमीनो एसाइल सिंथेटेस लूप भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक एंजाइम है। अमीनो एसाइल सिंथेटेस एक एंजाइम है जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन के दौरान अमीनो एसिड्स को जोड़ देता है, किसके साथ? एक्सेप्टर आर्म के साथ, अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट के साथ। और ये जो ये एंजाइम है अमीनो एसाइल सिंथेटेस एंजाइम जो है ये इसी डीएचयू लूप के साथ जुड़ जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। अगर आप हकीकत में देखोगे हर किसी अमीनो एसिड के लिए, हर किसी अमीनो के एसिड के लिए एक सेपरेट टीआरएनए होती है। याद रखना, हर किसी अमीनो एसिड के लिए एक सेपरेट टीआरएनए होती है। 20 अमीनो एसिड्स है हमारे पास, 20 अमीनो एसिड्स के लिए 20 टीआरएनए होते हैं। इनिशिएटर टीआरएनए हमारे पास इनिशिएटर कोडॉन के लिए, आग के लिए एयूजी, मैंने आपको बताया पहले भी, ये इनिशिएटर कोडॉन है। ये वो कोडॉन है जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन स्टार्ट करता है। तो इस एयूजी कोडॉन के लिए हमारे पास, जिसे हम इनिशिएटर कोडॉन बोलते हैं, इसके लिए हमारे पास अलग टीआरएनए होते हैं, उसको हम बोलते हैं इनिशिएटर टीआरएनए। आपके टेक्स्ट में वाज़ेह तौर पर लिखा है देयर आर सेपरेट टीआरएनएस फॉर सेपरेट अमीनो एसिड्स। हमारे पास 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स है, हर किसी अमीनो एसिड की अलग अलग टीआरएनए होगी। इनिशिएटर टीआरएनए हमारे पास है इनिशिएटर कोडॉन के लिए। हमारे पास 3 नॉनसेंस कोडॉन्स है, सेटॉप कोडॉन्स है, या, यैग एंड यिगा। ये वो 3 अमीनो एसिड्स है जिनके लिए कोई भी टीआरएनए नहीं होती है, बिकॉज दे डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड। तो याद रखना। और अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर देखोगे टीआरएनए का, इट इज अ वेरी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर एंड दिस स्ट्रक्चर इज 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। अब मैंने आपको बताया, इफ यू सी द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए, इट इज a 3D structure, 3-dimensional compact structure, and this structure resembles with inverted L. So it is the basic structure of tRNA is having inverted L shape. This is the basic structure of tRNA. This is the 3-dimensional structure of the tRNA. This is the 3-dimensional basic structure of tRNA. It looks like inverted L. It is having inverted L shape. And if you see the secondary structure, if you see the secondary structure of tRNA, the secondary structure of tRNA is called as clover leaf model of tRNA. Remember, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए को हम बोलते हैं क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ या क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। सो रिमेंबर, इन्वर्टेड एल फॉर्म या इन्वर्टेड एल शेप ऑफ टीआरएनए रिप्रेजेंट्स द बेसिक कंपैक्ट एंड 3D स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए, while as clover leaf structure or model of tRNA represents the secondary structure. Clover leaf model structure of tRNA has loops and stems. See, this is loop, this is stem. Here are some 7 unpaired bases. Here are some 7 unpaired bases. Here are some 7 unpaired bases. Then there is stem, then there is stem, and then there is stem.
and we are having a short arm. The function of these short arm is so far not known to the scientists. तो हम याद रखेंगे tRNA मॉलिक्यूल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये एडाप्टर मॉलिक्यूल एक्ट करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन. उससे क्या मतलब हो गया? उससे मतलब ये हो गया कि ये एक तरफ से mRNA के ऊपर कोडान को रीड करते हैं और दूसरी तरफ से अकॉर्डिंगली अमीनो एसिड को पकड़ के लाता है और प्रोटीन सीक्वेंस में पॉलीपेप्टाइड में जोड़ देता है. मैंने आपको बताया इस tRNA के दो बेसिक स्ट्रक्चर्स हमारे पास है. एक इन्वर्टेड एल शेप है इसकी. दिस इन्वर्टेड एल शेप रिप्रेजेंट्स द बेसिक 3-dimensional स्ट्रक्चर ऑफ tRNA. This structure is very compact and we are having clover leaf model of tRNA or clover leaf structure of tRNA, and this clover leaf structure of tRNA represents the secondary structure of tRNA. In this clover leaf structure of tRNA, we are having three very important loops. One is Anticodon loop, another is T-C loop, and another is DHU loop. Anticodon loop is the loop where anticodon is present that reads the codon present on mRNA, whereas T-C loop has modified base pseudouridine. It acts as site for binding of ribosomes during the process of translation. DHU loop, it has a modified dihydroxyuridine base, and this loop acts as binding site for amino acyl synthetase, and we are having an acceptor arm. And remember, this acceptor arm is the site where amino acids bind to the tRNA, where amino acids are accepted by the tRNA. This site is also called as amino acid binding site. And remember, this amino acid binding site is always present at the 3' end of the tRNA. And remember, at this 3' end, we are having a conserved sequence. We are having a conserved sequence of CCA. Shabash, this was all about the structure of the role of tRNA as an adapter molecule and its structure. We will now try to study the process of translation. That what is translation? What is translation? Translation. The process of polymerization of amino acids into proteins, into polypeptide is known as translation. See, the process translation is actually a polymerization process in which amino acids are associated to form a polypeptide, to form a protein. See, we are having amino acids. हमारे पास AAs है, amino acids है. These amino acids are joined together. They are polymerized to form what is called as polypeptide. To form what is called as polypeptide. A number of polypeptides joined together to form a protein. So remember, शाबाश. तो हमारे पास अमीनो एसिड्स होते हैं. ये अमीनो एसिड्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, पॉलीमराइज हो जाते हैं. जब ये जुड़ जाते हैं, एक पॉलीपेप्टाइड बनता है. एक काफी सारे पॉलीपेप्टाइड्स जुड़ के पॉलीपेप्टाइड में कुछ मॉडिफिकेशंस होती है. we get a protein. So translation is the process of polymerization of amino acids into polypeptide. Shabash, this process is known as translation. And remember, the nature and sequence of amino acid, it is dependent in a polypeptide, is dependent upon the type of bases that are present in an mRNA. इसका मतलब हो गया, एक पॉलीपेप्टाइड के अंदर, एक प्रोटीन के अंदर किस तरह के अमीनो एसिड्स और उनकी सीक्वेंस क्या होगी, ये डिपेंड करेगा कि mRNA के ऊपर नाइट्रोजनस बेसिस की सीक्वेंस क्या है. सो मैंने आपको बताया द नेचर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन अ पॉलीपेप्टाइड
completely, totally depends upon the sequence of nitrogenous bases in an mRNA molecule. शाबाश, मैंने आपको बताया ट्रांसलेशन के दौरान अमीनो एसिड्स पॉलीमराइज होते हैं, पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं। ये एक अमीनो एसिड है, ये दूसरे अमीनो एसिड के साथ जुड़ जाता है, ये तीसरे अमीनो एसिड के साथ जुड़ जाता है, ये चौथे अमीनो एसिड के साथ जुड़ता है, एंड सो ऑन। एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ जुड़ जाता है बाय अ बॉन्ड, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। रिमेंबर, polypeptide bond, or simply it is also called as, or this also called as peptide bond. Peptide bond बोलते हैं। जब एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ जुड़ जाता है, they associate with the help of a covalent bond. That bond is called as peptide bond. तो याद रखना, एक पॉलीपेप्टाइड, एक प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड्स जुड़े होते हैं with the help of polypeptide bond, with the help of peptide bond, with the help of peptide bond. और तो इस तरह सिंपली हम बोलेंगे the process of synthesis of proteins or the process of polymerization of amino acids into proteins or polypeptides. This is known as translation. The nature and sequence of amino acids in a protein completely depends upon the sequence of nitrogenous bases in an mRNA molecule, and during the process of translation, proteins, amino acids join with one another with the help of a bond. That bond is called as peptide bond, and the machinery that's responsible for the process of translation is called as ribosomes. Ribosomes जो है ये वो मशीनरी है जहां पे प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, जिनके अंदर या जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन करते हैं, जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। तो याद रखना, मैंने आपको बताया द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन केस ऑफ यूकैरियोट्स takes place inside the nucleus, while as the process of translation in case of eukaryotes takes place in cytoplasm. In case of prokaryotes, there is no nuclear membrane. Once the process of replication takes place, process of transcription and translation, they are coupled processes in case of prokaryotes because of the lack of nuclear membrane. So remember, in case of the seed for the process of translation, protein synthesis in eukaryotes is cytoplasm, where ribosomes are present. These ribosomes, they are actually made up of RNA. They are made up of RNA plus 80 different proteins. They are made up of RNA and 80 different proteins. These ribosomes, they are basically made up of RNA and 80 different proteins. 80 different proteins. They are made up of RNA and they are made up of proteins. So that is why when we define these ribosomes, we say that these are ribose nucleic acid. These are ribonucleoproteinaceous particles. These are ribonucleoproteinaceous particles. It means that we are defining them by their biochemical nature. That is, they are made up of RNA and they are made up of proteins. And it's written in your text that these ribosomes, they are made up of RNA and 80 different proteins. And these ribosomes, when inactive, these ribosomes, when inactive means when they are not carrying out the process of what is called as translation, they are present inside the cell, in the cytoplasm of the cell, in the form of subunits. And we are having two subunits of each of ribosomes. One is small subunit of ribosome, another is large subunit of ribosome. In case of prokaryotes, the small ribosomal subunit is called as 30S ribosomal subunit, but in case of eukaryotes, the small ribosomal subunit is called as 40S ribosomal subunit. Similarly, in case of prokaryotes, the large ribosomal subunit is called as 50S ribosomal subunit, while as in case of eukaryotes, the large ribosomal subunit is called as 60S ribosomal subunit. Remember, so these ribosomes, they are actually made up of RNA and proteins. 80 different proteins are present in ribosomes.
when these ribosomes are inactive, it means that when they are not carrying out the process of translation, these ribosomes, they are present in the form of small units, they are called as subunits, and there are two ribosomal subunits in each ribosome. One is small, another is large. The small ribosomal subunit in case of prokaryotes is called as 30s ribosomal subunit, while as the same small ribosomal subunit in case of eukaryotes is called as 40s. The large ribosomal subunit in case of prokaryotes is called as 50s ribosomal subunit, while as in case of eukaryotes, the large ribosomal subunit is called as 60s ribosomal subunit. So remember this thing. Ribosomes play two critical roles. Ribosomes जो है, ribosomes play two crucial roles during process of translation. What are those crucial roles? For example, first crucial role is large ribosomal subunit जो है, large ribosomal subunit, RS मैंने लिखा, large ribosomal subunit, that is if we take the case of, that is 60s in case of eukaryotes, while as 40s in case, 50s in case of prokaryotes. This larger ribosomal subunit, it has two sites. One site is called as A site, another is called as P site. There are two sites present in the large ribosomal subunit. This is very important point from entrance point of view, from Neet examination point of view. That is the larger ribosomal subunit. This is larger ribosomal subunit, and this larger ribosomal subunit has two sites. One is A site and there is P site, and A site is the site on the larger ribosomal subunit where the amino acid charged tRNA, where the charged tRNA carrying an amino acid enters into the is brought during the process of translation. This is tRNA, मैंने इस तरह बनाया, ये tRNA है, इसके ऊपर amino acid जुड़ा है. जब process of translation start होती है, ये tRNA along with this amino acid, it enters into the A site of the large ribosomal subunit or A site of the ribosomes. Now what happens? This tRNA along with this amino acid, it is then shifted to the A site. It is then shifted to another site that is called as P site. So पहला एमिनो एसिड जब आता है, टीआरएनए जब आता है, एमिनो एसिड को लेके वो ए साइट पे एंटर करता है. इसको बोलते हैं एमिनो एसाइल बाइंडिंग साइट. दिस इज कॉल्ड एज एमिनो एसाइल टीआरएनए बाइंडिंग साइट. एंड सेकंड पी साइट, दिस इज कॉल्ड एज पेप्टाइडाइल साइट. जब ये यहां पे आता है, देन दिस tRNA along with amino acid, it is shifted to P site, peptidyl site, and when it is shifted to P site, this A site remains empty. When this A site remains empty, see what happens? New amino acid, नया tRNA amino acid को लेके A site पे enter होता है, and now this bond formation, peptide bond formation takes place between these two amino acids. Peptide bond formation takes place between two amino acids, and the tRNA that is present at the P site, it is being released. इस tRNA को रिलीज किया जाता है. आप यहाँ पे आप देखिए, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो है अमीनो एसिड जुड़ गया. ये अमीनो एसिड जो है इसने पेप्टाइड बॉन्ड बनाया किसके साथ? दूसरे टीआरएनए के साथ, जो अब यहां से ए साइड से शिफ्ट होके कहां पे जाएगा? पी साइड के साथ इस यहां पे आ जाएगा, पी साइड पे आ जाएगा. फिर यहां पे इस तरह यहां ये अमीनो एसिड ये रिलीज होगा, ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा इसके साथ, तो इस तरह एक पॉलीपेप्टाइड बनेगा. तो हम याद रखेंगे, हमारे पास जो लार्ज राइबोसोम जो है, दे प्ले टू क्रूशियल रोल्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन. वन इज दैट
the larger ribosomal subunit, that is 60S in eukaryotes and 50S in eukaryotes, have two sites. One is A site where amino acid enters during the process of translation, and P site where peptide bond formation takes place during the process of translation. This is one. And second is that these ribosomes जो है, they act as catalysts. They act as ribozymes. If ribosome acts as catalyst, we know that we are having, in case of prokaryotes and in case of eukaryotes, we are having an RNA molecule in the shabash. We are having RNA molecule. We are having RNA molecule in both. We are having RNA present in the ribosomes of both prokaryotes and eukaryotes. And in case of prokaryotes, 23S ribosomal RNA is there. We are having 28S ribosomal RNA. This 23S ribosomal RNA, in case of prokaryotes, acts as a catalyst. Since it is an RNA molecule that acts as an enzyme, this enzyme is called as ribozyme. While as in case of eukaryotes, the 28S ribosomal subunit, ribosomal RNA, 28S ribosomal RNA act as an enzyme. This enzyme, though it is RNA, it's called as ribozyme, and these ribozyme, they both help in the formation of peptide bond. They help in peptide bond formation. During the process of translation. ट्रांसलेशन के दौरान दो एमिनो एसिड्स को हमें जोड़ना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ ए बॉन्ड दैट इज कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड. इस पेप्टाइड बॉन्ड में हमें हेल्प करते हैं आरएनए कंटेनिंग एंजाइम्स जिनको हम राइबोजाइम्स बोलते हैं. ये राइबोजाइम्स अलग नहीं होते हैं. बेसिकली ये आरएनए जो राइबोसोम्स के अंदर होता है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के अंदर जो 23S राइबोसोमल आरएनए है, और जो यूकैरियोटिक आरएनए राइबोसोम के अंदर जो 28S राइबोसोमल आरएनए है, यही एक्ट करते हैं एज राइबोजाइम्स, यही एक्ट करते हैं एज कैटालिस्ट्स, यही एक्ट करते हैं एज एंजाइम्स. तो ये इस तरह हमें मदद करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड. सो रिमेंबर, राइबोसोम्स दे प्ले टू क्रूशियल रोल्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन. वन इज दैट लार्जर राइबोसोमल सबयूनिट has two sites, two important sites in it. One is A site and another is P site. A site is the site where where tRNA along with an amino acid enters during the process of translation, and P site is the site where the peptide bond formation takes place during the process of translation. And for the formation of this peptide bond, we require enzymes. We do not have separate enzymes, but ribosome itself acts as an enzyme because they have RNA in it. In case of prokaryotes, we are having 23S ribosomal RNA, whereas in case of eukaryotes, we are having 28S ribosomal RNA. It is this 23S ribosomal RNA and it is this 28S ribosomal RNA in prokaryotes and eukaryotes respectively that help in the peptide bond formation during the process of translation and thus act as ribozymes or thus act as catalysts. This was about these ribosomes, the translational machinery, that is the ribosome. So we remember ribosomes are made up of RNA and proteins, 80 different proteins. These ribosomes, when they are inactive, they are in the form of subunits. And when smaller subunit, for example, this is mRNA, and when smaller subunit, see this is smaller subunit, as soon as smaller subunit gets associated with the mRNA, the process of translation starts from here. Remember, it is not the larger ribosomal subunit that starts the process of translation. It is the smaller ribosomal subunit that when binds to the mRNA itself starts the process of translation. तो switch on, translation का switch on कब होता है? जब smaller ribosomal subunit जुड़ता है किसके साथ? mRNA के साथ. ये याद रखना बहुत जरूरी है,
तो असल में जब प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन जो है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन जो है इसके 3 स्टेप्स है. प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन 3 steps. Process of translation takes place in 3 steps. One is activation of amino acid takes place. This is the first step. Activation of amino acids. Second is charging of amino acids. Charging of amino acids AA मैंने लिखा. थर्ड जो है फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन. Formation of polypeptide chain. There are 3 steps in the process of translation. One is first amino acids are activated. Why these amino acids are activated, I will discuss it later on. Second is charging of amino acids takes place. What does we mean by charging of amino acids? We will discuss it. What is meant by formation of polypeptide chain, how polypeptide chain takes place. This third point we will discuss it in next lecture, but in this lecture we will explain the first 2 points of the process of translation, that is activation of amino acids and charging of amino acids. So how does activation of amino acids takes place? What is the necessity of activation of amino acids? See here, we are having what is activation of amino acids. Before the actual process of translation begins, the amino acids, they are activated with the help of ATP in presence of an enzyme. That enzyme is called as amino. That enzyme is called as amino acyl synthase, or this enzyme is also called as amino acyl tRNA synthase भी हम इसको बोलते हैं. शाबाश. Plus in presence of magnesium divalent positive ions. So for the process of activation of amino acids, we require magnesium divalent positive ions. This activation is done by an enzyme that is called as amino acyl tRNA synthase, and this activation is done with the help of ATP, the biological energy currency, to form what is called as amino acyl AMP, adenosine monophosphate enzyme complex plus pyrophosphate. 2 phosphate bonds are dissociated. Inorganic pyrophosphate is released. This is amino acid AMP, adenosine monophosphate enzyme complex plus PP is pyrophosphate, because ATP के 2 bonds टूटते हैं. जब 2 bonds टूटते हैं, एनर्जी रिलीज हो जाती है. उस एनर्जी से वो एनर्जी जो है वो एमिनो एसिड्स के साथ AMP एमिनो एसिड्स के साथ जुड़ जाते हैं. 2 bonds टूट जाते हैं. एमिनो एसिड एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट रहता है, वो जुड़ता है किसके साथ? एमिनो एसिड के साथ, प्लस इसके साथ एंजाइम जुड़ा होता है. दिस इज एक्टिवेशन हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये इस एमिनो एसिड को असल में हमने अटैच करना है टू द बाइंडिंग साइट, टू द एक्सेप्टर साइट ऑफ tRNA. असल में हमने इस एमिनो एसिड को जोड़ना है टू द बाइंडिंग साइट ऑफ tRNA. ये तभी जुड़ेगा जब इसके पास ताकत होगा, इसके पास एनर्जी होगी. वो एनर्जी कहां से आएगी? वो एनर्जी इसको प्रोवाइड करता है कौन? ATP. शाबाश. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. So remember, what does we mean by activation of amino acid? All amino acids before the beginning of process of translation are activated. They are energized by reacting them with ATP in presence of enzyme amino acyl tRNA synthase and magnesium divalent positive ions.
So we get amino acid AMP enzyme complex plus pyrophosphate. दो बॉन्ड्स इसके टूटते हैं, दो फॉस्फेट निकलते हैं, पायरोफॉस्फेट निकलते हैं, AMP एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट रहते हैं, वो एमिनो एसिड के साथ जुड़ जाते हैं। ये चार्जिंग हम इसीलिए करते हैं क्योंकि असल ये एक्टिवेशन हम इसीलिए करते हैं बिकॉज वी एनर्जाइज दीज अमीनो एसिड्स, हम इनको एनर्जाइज करते हैं ताकि दे इजीली गेट एसोसिएटेड विद द एक्सेप्टर साइट ऑफ द what is called as tRNA. So second step is called as charging of tRNA. This is second step, charging of tRNA. अब हमारे पास क्या है, we are having amino acid AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ये किसके साथ हमने अटैच करना है, इसको हमने रिएक्ट करना है, इसको हमने रिएक्शन करानी है टीआरएनए के साथ। असल में हमारा मकसद है ये अमीनो एसिड जो है ये टीआरएनए के साथ जुड़ना चाहिए, इसीलिए पहले हम एक्टिवेशन करते हैं किसकी, अमीनो एसिड की। जब हमने अमीनो एसिड की एक्टिवेशन की, हमारे पास अमीनो एसिड AMP एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनता है, इसको हम जोड़ देते हैं, इसको हम रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, टीआरएनए के साथ। सो व्हाट वी गेट amino acyl, we get amino acid, or this is also called as amino acyl tRNA plus हमें क्या मिलता है, AMP एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट अलग निकलेगा प्लस एंजाइम अलग हो जाएगा, हमने क्या किया, हमने अमीनो एसिड्स को टीआरएनए के साथ जोड़ दिया। when we bind amino acids to tRNA, this is called as charging of tRNA. इसको हम बोलते हैं charging of tRNA, और charging of tRNA is also known as amino acylation. This is called as amino acylation of tRNA, because this amino acid is associated with tRNA through an amino acyl linkage, through an amino acyl bond. So this association of amino acid with tRNA, this is also called as amino acylation of tRNA. This is also called as charging of tRNA. This is also called as activation of tRNA. तो इन दिस वे मैं आपको समझ आ गया two first steps that take place in the process of translation. One is the activation of amino acids. Second is charging of tRNA. How the formation of polypeptide takes place, we will discuss it in next lecture. I hope that you would have understood all the points which I have highlighted in this video lecture. Thank you one and all for watching this video lecture.